स्पोकन की क्लास में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को मील के बारे में बताऊंगा। व्हाट डज मीन ऑफ मील? मील एंड हाउ मेनी मीन मील्स आर देयर। ओके, तो आज मैं आप लोगों के साथ में इसका डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो को अगर आप कैसे एक मील के बारे में आप अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग या फिर अपने स्टूडेंट के साथ में कैसे बात कर सकते हैं, या अपने ब्रदर सिस्टर मदर फादर किसी के साथ भी आप कैसे डिस्कस करेंगे, इसके बारे में मैं आप लोगों को एक क्लू दे रहा हूँ। डियर फ्रेंड्स, तो इस टॉपिक को पूरी देखें मील के बारे में। ओके, तो जनरली देर आर थ्री टाइप ऑफ मील्स। ओके, जनरली देर आर देर आर जैसे पूछ सकते हैं, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, फर्स्ट नंबर। सेकेंड पर्सन बोलता है यस, यस। फिर फर्स्ट पूछेगा हाउ मेनी मील्स आर देयर, हाउ मेनी मील्स आर देयर, है ना। तो फिर आपका जवाब देगा, सेकेंड पर्सन जवाब देगा देयर आर mainly three types three types of meal. Then can you tell me the name of the meal? Okay, can you can you tell me the name of meals? Of course, तो फिर कहेंगे of course. ओके, of course, या yes, yes I can, yes I can. Okay, there are, these are, okay, these are morning meal, these are, okay, these are morning meal, these are morning meal, afternoon meal, afternoon meal, and evening meal. Evening meal. Okay, and next ask the question, second first person, what what is what is what is morning meal known as? What is morning meal known as? सेकेंड पर्सन जवाब देंगे it is known as breakfast. It is known as breakfast. Okay, next, what time what time do you do you take your breakfast? What time do you take your breakfast? नेक्स्ट सेकेंड पर्सन रिप्लाई करेंगे आई जनरली टेक माई ब्रेकफास्ट एट 7:30.
7:30 a.m. ओके, नेक्स्ट फिर कहेंगे वो फर्स्ट पर्सन आस्क व्हाट डू यू टेक, व्हाट डू यू टेक इन योर ब्रेकफास्ट, व्हाट डू यू टेक इन योर व्हाट डू यू टेक इन योर ब्रेकफास्ट? आई जनरली टेक bread and butter. I generally take bread and butter. Butter. Okay. Next. Wow. Wow. Your breakfast. Your breakfast. Your breakfast is so so healthy. Next, say thank you. Thank you so much. Thank you so much. Next, say yes. Second person say this is the two, this is the first. Okay, then say you are most welcome. Okay, you are most welcome. Okay, so this is the you have to try with your friends, brother, sister, and you can start with this set. Okay, and what do you feel about this set? You have to comment in my comment box. Okay, now next set you can ask like this, afternoon meal and evening meal. Okay, and if you know, and if now I will write again that one. Okay, so then say here. Okay, uh, excuse me, yes, then start that one. Okay, you can ask that one set which chapter I love the work. Then start, excuse me, yes, then say what is known as, है ना? What what is afternoon, what is afternoon meal known as? It is known as lunch. Okay, then say it is it is known as lunch. Okay, then again ask time, when do you take your lunch? When do you take when do you take your lunch? When do you take your lunch? Then again reply, I take my lunch at 12 p.m. I take की जगह finish you can write also. I finish I finish my lunch at 12 p.m. Okay, what do you take? Next ask what do you take in your lunch? Generally
I I generally take I generally take I generally take rice, pulses, and green vegetable, green vegetables. Okay. Then again say, wow, wow, your lunch is so hygienic, so hygienic. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Then say, you are most वेलकम। यार फ्रेंड्स, तो ये सेकेंड सेट हो गए आपको मील पर। अगर आप इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, इवनिंग मील के बारे में बातें कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं हिंदी में, आफ्टर दैट मूव टू द नेक्स्ट सेट। ओके, नाउ हियर एक्सक्यूज मी। यस, एक्सक्यूज मी कहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ पर हम मान लो कि कोई दूसरे काम में व्यस्त है ना। तो जब व्यस्त है तो अपनी तरफ जब उनकी ध्यान को अट्रैक्ट करने हैं, तो देन यू हैव टू से दैट टाइम एक्सक्यूज मी। तो देन जनरली the reply yes, of course, obviously. Okay, then you can start your conversation. Okay, so then here what is afternoon meal known as? दोपहर के खाना को क्या किस रूप में जाना जाता है ना। तो वो सेकेंड पर्सन कहते हैं इट इज नोन एज लंच, इसे लंच के रूप में जाना जाता है ना। व्हेन डू यू टेक योर लंच, तुम या आप कब अपना लंच लेते हो, है ना। तो सेकेंड पर्सन बोल रहे हैं आई फिनिश माई लंच एट 12 PM, मैं 12 बजे अपना लंच लेता हूँ या पूरा करता हूँ, है ना। तो नेक्स्ट है व्हाट डू यू टेक इन योर लंच, आप अपने लंच में क्या लेते हैं। तो आई जनरली टेक राइस, पल्सेस एंड ग्रीन वेजिटेबल, है ना। मैं सामान्यतः लेता हूँ क्या, राइस, पल्सेस, दाल और हरी सब्जियाँ। वाह, योर लंच इज सो हाइजीनिक, क्या बात है, तुम्हारी लंच इतनी हाइजीनिक है, सुपाच्य है। थैंक यू, थैंक यू सो मच, है ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है ना। तो नेक्स्ट सेट यू कैन आस्क व्हाट इज नेक्स्ट सेट। if you want to ask the about the evening meal, then you have to ask and replace here. Okay, what is evening meal known as, here write evening meal. Okay, evening meal known as, here you can write evening meal known as, here evening meal known as. So there here it is known as, it is known as it is known as dinner, it is known as dinner. Okay, it is known as dinner. Okay, next, when do you take your dinner, when do you take your dinner, you can say, है ना, dinner, when do you take your dinner। I finish my dinner, I finish my dinner at 12 p.m. Okay, 12 p.m. What do you take in your dinner, है ना, what do you take in your dinner, dinner। So then I generally take chapati, or you can say roti, roti sabji, and roti, you can say roti sabji and milk, milk। Okay, this is the your answer, roti sabji and milk। Wow, your dinner is so healthy, your dinner is so healthy, you can write, or hygienic you can say, that is the
what you want to say. Okay, thank you so much. Thank you so much. You are most welcome. Dear friends, what do you think about this conversation? Now you have to comment in my comment box. And what do you think next conversation? You can also comment in my comment box. Thank you so much.